Alright, so we are starting with the 30 seconds countdown and फिर हम stream start कर रहे हैं. Assalamu alaikum everyone. सारा मेरी आवाज़ ऑडिबल है? जी. Alright, thank you. Assalamu alaikum everyone. आप सबको खुशामदीद है कराची आई के सेकंड सेशन में रमज़ान स्किल सीरीज 2022. मैं हूँ मीसम रज़ा हिमानी, फाउंडर Karachi.ai, और आप सबको इस ट्रांसमिशन के अंदर खुशामदीद कहता हूँ. और आज का जो सेशन है वो पिछले सेशन की एक कड़ी है, जहाँ पे हमने पिछले सेशन के अंदर डेटा इंजीनियरिंग सीखी थी और हमने एक कंज्यूमर फाइनेंशियल कंप्लेंट्स का डेटा इंटरनेट से एपीआई के ज़रिए एक्वायर किया था और फिर उसको हमने गूगल डेटा शीट्स के ऊपर सेव कराया था. आज की जो कड़ी है वो उससे आगे बढ़ेगी और उस डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेगी. मेरे लिहाज से ये बहुत एक्साइटिंग सेशन है और उर्दू में रिकॉर्ड होने की वजह से काफ़ी लोगों को इससे आज भी और बाद में भी रेफरेंस में सीखने को मिलेगा. लेकिन सबसे पहले वो लोग जो कि आज के सेशन में न्यू हैं और हत्ता के कम्युनिटी में भी न्यू हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. तो जो लोग हमारी कम्युनिटी को जानते हैं, प्लीज बेयर दिस इंट्रोडक्शन विद अस. Karachi.ai एक अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी है जो कि पिछले 4 साल से AI, ML, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के ऊपर तमाम एजुकेशन और अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशंस को एम्पावर कर रही है. हम एक 8000 प्लस मेंबर्स की कम्युनिटी है जो कि आपके फेसबुक ग्रुप पे मौजूद है. Karachi.ai की जो कम्युनिटी है उसके 3 पिलर्स हैं. मैं आपको थोड़ा सा अनवाइंड करता हूँ कि ये कम्युनिटी क्या क्या काम करती है. अगली स्लाइड के अंदर इस कम्युनिटी के फाउंडर्स और इसके वर्कर्स का इंट्रोडक्शन आएगा. हमारे कम्युनिटी के 3 मेन पिलर्स हैं जो कि अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट है और हम पिछले 4 साल से इसी के ऊपर काम कर रहे हैं. सबसे पहले अपनी टीम का तारुफ कराता हूँ. मी माई सेल्फ, हमारे साथ बोर्ड मेंबर्स मौजूद हैं और हमारी ऑपरेशनल टीम मौजूद है जो कि हमारे इन सारे इवेंट्स को कामयाब बनाती है. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल आवर बोर्ड मेंबर्स एंड आवर टीम जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया और इस 4 साल की जर्नी तक आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है. अवेयरनेस के बारे में बताता चलूँ तो अवेयरनेस हमारे क्वार्टरली मीटअप सेशन से अलाइंड है. अवेयरनेस के लिए हम क्वार्टरली मीटअप्स कराते हैं कराची आई के बिहाफ पे. शुरू के 2 साल हमने ऑन साइट मीटअप्स कराए जो कि वेरियस यूनिवर्सिटीज जिनके लोगोज यहाँ पे मेंशन है वहाँ पे हमने इवेंट्स करवाए. इसके अलावा पिछले 2 सालों में क्योंकि कोविड की वबा हमारे यहाँ फैल गई थी तो हमने ये मीटअप्स ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाए. तो इन एग्रीगेट हम तकरीबन 14 मीटअप्स करा चुके हैं जिसमें 9 ऑन साइट मीटअप्स करा चुके हैं और 5 ऑनलाइन मीटअप्स करा चुके हैं. इन मीटअप्स के अंदर 30 मिनट्स के हर स्पीकर के सेशंस होते हैं और एक मीटअप एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर होता है, जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री या हेल्थ केयर या इकोनॉमिक्स या किसी भी और एरिया के ऊपर. इन मीटअप्स के अंदर स्पीकर्स आते हैं, आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे AI, ML, डेटा साइंस की इम्प्लीमेंटेशन के जरिए और डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं. एंड ऑफ द इवेंट लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह के इवेंट्स आपके नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं
اور لوگ وہاں پہ ملتے ہیں, اپارچونیٹی شیئر کرتے ہیں, کافی لوگوں کی جابس بھی لگ جاتی ہیں اور کافی لوگوں کو ریسورسز بھی مل جاتے ہیں. کچھ اسٹارٹ اپس جو کہ ہمارے ساتھ آلریڈی فیچر ہو چکے ہیں. یہ ایک گلمس ہے ہمارے میٹ اپس کا, جہاں پہ ہم اسپیکرس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, گیسٹ آف آنرس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو فزیکل سرٹیفکیٹس ایشو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم انگیجمنٹ پہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں. انگیجمنٹ کے لیے ہم نے سب سے پہلے آن لائن کورسیرا کا کریکولم ڈیوائس کیا ہے, جو کہ کراچی DOTAI.com/free پہ اویلیبل ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. کافی لوگوں کو یہ ریسورسز کے بارے میں معلوم نہیں, تو ہوپ فلی کہ یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے, اس کے ذریعے آپ کو یہ چیز یہاں پہ واضح ہو جائے گی. یہ فری کریکولم ہے پورا جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کورسیرا کا, اور ہم نے اس کے علاوہ یوٹیوب کا پاتھ وے بھی دیا ہے اگر آپ کورسیرا کے نہیں بلکہ یوٹیوب سے لرن کرنا چاہتے ہیں. تمام گائیڈنس ہم نے یہاں پہ دی ہوئی ہے, انکلوڈنگ دا جاب اپرچونیٹیز, جس کا آگے ذکر ہوگا. نیکسٹ آپ کے پاس Karachi.ai کا فیس بک گروپ ہے, جس کے اندر 8000+ کمیونٹی ممبرز ہیں, جو کہ آپ کو کیوریٹڈ کانٹینٹ کو سرچ کرنے میں, پوسٹ کرنے میں, اپنی کیوریز کو پوسٹ کرنے میں, لرننگ کے لحاظ سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو ویکلی بیسس پہ اور ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ کافی لرننگ کانٹینٹ شیئر ہوتا ہے. یو کین بی پارٹ آف دا گروپ اگر آپ پارٹ آف دا گروپ نہیں ہے. فائنلی ہم نے یہ تمام میٹ اپس کو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر کے اردو کے اندر نوٹ کر دیا ہے. وی آر ون آف دا پرائم کمیونٹیز جنہوں نے تقریباً 500+ آورس کا کانٹینٹ یوٹیوب پہ اردو میں مشین لرننگ, AI/ML, ڈیٹا سائنس کے لیے پرووائڈ کیا گیا ہے. تو آپ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے تمام ایونٹس اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. فائنلی ہمارے پاس بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ سر اگر آپ یہ ساری چیزیں جو پڑھا رہے ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہے, لیکن ہم سے گھر پہ ٹائم نہیں لگ پا رہا, تو آپ کوئی آن سائٹ پروگرامز کروائیں. ہم نے سرٹیفائڈ پروفیشنل پروگرام کا آغاز کیا پچھلے 2.5 سال میں, اور اس کے اندر ہم نے آپ کی پوری جرنی پلان کی ہے. لیفٹ سائڈ سے آپ کمیونٹی ممبر سے سٹارٹ ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ ہمارے فیس بک گروپ کو جوائن کرتے ہیں, لنکڈ پیجز اور ان کے اوپر آپ فالو کر لیتے ہیں. فالوڈ بائی اگر آپ بزنس پروفیشنل ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس ڈگری سے تعلق نہیں رکھتے, تو ہم نے آپ کے لیے بزنس پروفیشنل ٹریک ڈیزائن کیا ہے, جہاں پہ آپ سرٹیفائڈ ویژوائزیشن ایکسپرٹ نام کے کورس سے بزنس انٹیلیجنس سے سٹارٹ کریں گے, اینڈ دین یو ول کمپلیٹ دس کورس فار دا 3.5 months, اینڈ پھر آپ جمپ ان کریں گے ڈیٹا سائنس میں, جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, سرٹیفائڈ ڈیٹا انالسٹ ان کولیبوریشن ود فاسٹ نیوسز آفیشیلی. سیکنڈلی ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ٹریک ہے, جس کے اندر آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے کہ آپ یا تو بزنس سائٹ پہ موو کر جائیں تاکہ آپ بزنس انٹیلیجنس ٹول سیکھیں, ٹیبلیو, پاور BI, کلک سینس. اگر آپ ڈیٹا سائنس کی طرف ڈائریکٹ موو کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس ٹریک کے لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا سائنس میں انرول ہو سکتے ہیں سرٹیفائڈ ڈیٹا انالسٹ کے اندر. اس کے اندر آپ پائتھن, SQL, R, اسٹیٹسٹکس اور مشین لرننگ پڑھیں گے. فالوڈ بائی اگر آپ اس ایریا کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے جو کہ ڈیسیشن میکنگ سے انوالو ہے, بلکہ آپ آرکیٹیکچر اور سولوشن کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں صرف, تو آپ ڈیٹا انجینئرنگ کے کورس میں بھی آ سکتے ہیں. ڈیٹا انجینئرنگ کا تعلق ڈیٹا ڈریون آرکیٹیکچرز اور ڈیٹا کی موومنٹ سے ہے, اس کا پیور تعلق ڈیٹا سائنس کے اندر الگورتھم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ڈیٹا انجینئرنگ ایسا ٹریک ہے جو کہ وہ لوگ جو کہ اسٹیٹسٹکس یا بزنس امپلیمنٹیشن اور بزنس تھنکنگ سے پریشان ہوتے ہیں, وہ ڈیٹا انجینئرنگ کے کورس میں آ سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو CS بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ہی صرف الاؤنس اویلیبل ہے. اس کورس کے اندر ہم ڈفرینٹ آپ کو ڈیٹا انجینئرنگ میں ایکوزیشن سے لے کر آپ کی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ تک اور اس کی ڈیلیوری اینڈ ڈپلائمنٹ, ایئر فلو اور اپاچی اسپارک سے لے کر کلاؤڈ کی انفارمیشن تک آپ کو یہاں پہ ہم ٹرین کرتے ہیں. فائنلی وی ہیو این انڈسٹری اپرینٹسشپ پروگرام, تاکہ آپ یہ جو سارے اسکل سیکھ جائیں وہ اپنے امپلائر کے پاس اپلائی کر سکیں اور اس کے ذریعے فری لانسنگ بھی کر سکیں. میں نے کیونکہ تمام ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہیں تو میں آگے کی سلائیڈ ذرا اسپیڈ سے نکالوں گا. اس کے علاوہ ہم آگے انشاءاللہ مئی میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر ویژن کی آن سائٹ ٹریننگ کی اسپیشلائزیشن لے کے آئیں. اس کے علاوہ ہم مشین لرننگ کی اسپیشلائزیشن لانا چاہتے ہیں, جیو اسپیشل انالیٹکس انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور NLP کرنا چاہتے ہیں.
اس تمام انیشیٹوز کے پیچھے آپ سب کا ہاتھ ہے، تو آپ لوگوں کا ساتھ ضرور ریکوائرڈ ہوگا. ہمارے کچھ پروگرامز ہیں جن کی سلائیڈز میں آپ کو صرف شو اپ کر رہا ہوں. آلریڈی میں ان کی پچھلی بات کے اندر ڈسکشن آپ کو دے چکا ہوں. فائنلی ہم امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم آپ کو اپارچونیٹیز اپلائی کرتے ہیں. انڈسٹری اکیڈمیا کو ہم برج کرتے ہیں اور تمام اپارچونیٹیز آپ کے لیے ایک پیج پہ لا کے کھڑی کر دیتے ہیں. کراچی اے آئی اپارچونیٹی سرکل اسی طریقے کا پارٹ ہے، جہاں پہ آپ karachi.ai.com/careers لکھیں اور آپ کے سامنے ایک انڈسٹری لیڈنگ ڈیش بورڈ اویلیبل ہو جائے گا، جہاں پر آپ کو تمام وہ جابز مل جائیں گی جو کہ ڈیٹا اورینٹیڈ کراچی میں اویلیبل ہیں. میں خاص طور پہ اس کے پیچھے ہمارے والنٹیئرز مصطفیٰ، پردیپ اور دوسرے والنٹیئرز کا شکر گزار ہوں، جو کہ جاب ہنٹنگ کو کرتے ہیں اور مائن کر کے آپ کے لیے اس ڈیش بورڈ کے اوپر یہ ڈیٹا کو لے کر آتے ہیں. یہاں پر آپ کو ٹوٹل انڈسٹری کا آؤٹ لک مل رہا ہے، کس طرح سے ڈیٹا سائنس کی جابز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہر اسکل ٹائپ کو فلٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنی جاب کو یہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ سب جو ہے وہ ان فیچرز کا فائدہ اٹھائیں گے اور کمیونٹی میں آپ کو اس طرح کی اپارچونیٹیز کافی ملیں گی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انڈسٹری اکیڈمیا کو برج کر رہے ہیں. We have 25 plus partners with us جو کہ ہماری سرٹیفکیشنز اور ہماری ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں، جس میں انڈسٹری لیڈنگ کمپنیز ہیں، انڈسٹری لیڈنگ ایسوسیشنز ہیں، اور اکیڈمیا پارٹنرز میں ہمارے ساتھ فاسٹ نیوسز کراچی آفیشلی ہے. فائنلی یہ ہمارے نمبرز کے اندر ایک گلوبل امپیکٹ ہے. آلدو یہ نمبرز کافی انڈرسٹیٹڈ ہے، میں ان کو اپڈیٹ کر دوں گا، لیکن یہ بتاتا ہے کہ 4 سال میں ہم نے اس کمیونٹی میں کیا اچیو کیا ہے. سو وی آل شوڈ بی پراؤڈ ایکولی ود اس. جو لوگ کمیونٹی میں نیو ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ضرور بضرور اپنے لیے ایک دفعہ karachi.ai.com کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو کمیونٹی کی لیوریج کا اندازہ ہو. اسی کے ساتھ میں اب موو کرتا ہوں سیشن کی طرف جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. I would like to formally welcome Ms. SAARAH RASHEED, who is Manager Quants at NBB Funds and also Principal Instructor for Python for Data Science at Karachi.ai. میں بہت شکر گزار ہوں سارا کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج کے سیشن کے لیے ہمیں ڈیڈیکیٹ کیا. تھینک یو سو مچ سارا فار جوائننگ. آئی ہوپ سو کہ آپ کا یہ سیشن بہت اچھا جائے گا اور ساتھی لوگوں کو سیکھنے ملے گا. Thank you so much, Mesa, for handing it over. I think I can share my screen and start. جی بالکل، اب آپ شیئر کر سکتی ہیں. شکریہ. Okay. Assalamu alaikum sabko. Welcome to the session on Python and data science and ML. So آج ہم لوگ اسی ڈیٹا سیٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے. لاسٹ ٹائم جو آپ کا رمضان اسکلز کا سیشن ہوا تھا اس میں آپ لوگوں نے کنزیومر کمپلینٹس کا ڈیٹا سیٹ ہینڈل کیا تھا. سو آج کے سیشن میں ہم اس ڈیٹا سیٹ کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں سے کچھ انسائٹس کو ایکسٹریکٹ کریں گے. We'll be doing something called EDA, Exploratory Data Analysis. ٹھیک ہے، that is basically about understanding کہ اس ڈیٹا کے اندر کیا کیا انسائٹس نکل سکتی ہیں. اس کے بعد پھر we'll go towards modeling. So once ہمیں ڈیٹا میں سے یوزفل انسائٹ ایکسٹریکٹ کرنی ہے we'll do some data cleaning. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈیٹا ماڈل کے تھرو پریڈکشنس کی کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، سو فرسٹ آف وی ہیو سم لائبریریز، ان کو ہم امپورٹ کرتے ہیں. ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس موجود ہے ان اور فائل. لیٹس ہیو اے لک کہ اس کے اندر کیا کیا روز اور کالمس موجود ہیں. صحیح، لیٹس ہیو اے لک آف ڈیٹا سیٹ. ٹھیک، تو ہمارے پاس فائنینس اور کنزیومرس کمپلینٹس کا ڈیٹا سیٹ موجود ہے جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل کالمس موجود ہے سچ ایز
ڈیٹ جس کو کمپلین ریسیو ہوئی تھی، کس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ وہ کمپلین تھی، کیا ایشو آیا تھا اس میں، کمپنی کا نے رسپونڈ کیا یا نہیں کیا، کس اسٹیٹ سے متعلق رکھتی ہے وہ. یہ ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس یو ایس کی فائنینشیل کنزیومر کمپلینس کا ہے. سو یہاں پر ان کی اسٹیٹس آ رہی ہیں، ان کا زپ کوڈ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کس اسٹیٹ کو کمپنی کو ریکویسٹ اور کمپلین موصول ہوئی تھی، اس کمپلین کا رسپانس کیا گیا تھا کہ نہیں، اس کمپلینس کیا تھی. سو بیفور وی گو ٹورڈز ماڈلنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیٹا کس طرح کا ہے، اس میں کیا کیا انسائٹس ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو ہم لوگ ایک ٹاپ سارا آپ ڈاؤن پلیز زوم کر دیں گی اسکرین، ریکویسٹ آئی ہے. زوم کر. اچھا تھینک یو. اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سو فرسٹ تھنگ ہم لوگ جو چیز سمجھیں گے وہ ڈیٹا ایکسپلوریشن ہے. ڈیٹا ایکسپلوریشن کے تھرو ہم ان کالمس پہ اور جتنے ہمارے پاس تقریباً 3 لاکھ قریب روز موجود ہیں. سو وی آر گونا گو اوور دس اینڈ ہیو اے لک کہ ہمارا ڈیٹا میں سے کیا کیا انسائٹس ہم نکال سکتے ہیں. سو ہم لوگ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ استعمال کریں گے کہ سب سے پہلے ہائی لیول پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے وی ول ہیو اے لک کہ چلیں اسٹیٹ کی بیسس پہ ہمارے پاس کس طرح کی کمپلینس موجود ہیں. ہم لوگ اسٹیٹ کی بیسس پہ وی ول کیٹیگرائز اور ڈیٹا، ٹھیک ہے، کہ سب سے زیادہ کمپلینس کس اسٹیٹ میں موجود ہیں. ون آف دا تھنگس دیٹ آئی ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس ایوری ٹائم وی آر ہیونگ اے سیشن از کہ جیسے ہی آپ کو ڈیٹا سیٹ کوئی بھی اویلیبل ہو، یو گو تھرو دا کالمس اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ڈو از برین اسٹارم. برین اسٹارمنگ کا مطلب آپ انڈرسٹینڈ کریں اور ٹرائی ٹو آسک یور سیلف دا کائنڈ آف کوشچنس یو کین کم اپ ود when you're looking at this data set. مطلب کہ اس ڈیٹا سیٹ کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کس طرح کے سوالات کے جواب آپ دے سکتے ہیں. سو امیجن یور سیلف کہ آپ کی کمپنی، اف یو ار ان اے کمپنی اور آپ کے ہیڈ آپ کو ایک ڈیٹا دیتے ہیں، بولتے ہیں اس میں سے انسائٹس نکال کے دو. تو the first thing you want to do is try to come up with questions کہ اس ڈیٹا سیٹ کے تھرو میں کن کن سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. So the first thing we're going to do is think about the questions that we can come up with. ٹھیک ہے. So starting from the very top, a very basic thing that we can do since we have complaints and they are all against کہ کس اسٹیٹ سے وہ کمپلین آئی ہیں. سو ایک تو یہ چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کی بیسس پہ کیٹیگرائز کر دیں کہ کتنی کمپلینٹس آئی ہیں، کس اسٹیٹ میں سب سے زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں. ٹھیک ہے. سو ہاؤ مینی complaints we received from one second. From each state, or another way of writing this would be کہ highest complaint کس state سے موصول ہوئی. Another thing that we can do is کہ ہمارے پاس complaints کی categories موجود ہیں اور complaints کس product سے متعلق ہے وہ چیز بھی موجود ہے. So another thing that we can do is see کہ کون سے product سے related سب سے زیادہ complaints آئی ہیں. So which product had the highest number of complaints. ٹھیک ہے. Another thing that we can look at is کہ کون سا اسٹیٹ تھا جس سے سب سے زیادہ ٹائملی رسپانس دیا ہے ٹو دوز کمپلینس. ہمارے پاس ایک یہ چیک موجود ہے کہ ٹائملی رسپانس کا کہ whether or not جو کمپلین ریسیو ہوئی وہ اس کا ٹائملی رسپانس دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا. سو یوزنگ دس میٹرک وی کین فگر آؤٹ کہ whether or not ان کمپلینس کون سی اسٹیٹس تھے بیسکلی جو کہ ٹائملی رسپانس دیتے ہیں ٹو دیئر complaints, consumer complaints. Gives highest. اس طرح one of the things about brainstorming is just coming up with questions, how we are going to solve them اور وہ سوالات کس طرح جواب دیے جائیں گے. That is something we learn throughout the course and I'm going to show you as well. But whenever you're brainstorming, don't ever آپ سوالات کو ایکسکلوڈ کبھی نہ کیجیے یہ سوچ کے کہ یہ ہوگا کس طرح. وہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ سوالات آپ کون کون سے ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں، کس طرح کو جواب دے سکتے ہیں. once you learn Python and once you learn data analysis and جو چیزیں ہم اس کورسز میں کور کرتے ہیں, through that you will be very easily able to answer those questions because ultimately code is just a tool that helps you answer those questions. So your coding میں آپ methods سیکھتے ہیں, جو functions آپ بناتے ہیں, they're all designed to help you answer these questions. ٹھیک ہے. So we're going to start off with these 3 questions. سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈیٹا کو ریڈ کرتے ہیں. I'm going to run this.
df variable में हमारे पास data set मौजूद है. So coming up with the first question, how many completes were received? Answering the first question. So we are going to use a variable. We're going to use a function called group by. So group by करता क्या है? Basically वो on the base कोई भी categorical variable, ठीक है, जैसे कि हमारे पास मौजूद है स्टेट में स्टेट के इनिशियल्स मौजूद हैं एंड वी आर गोइंग टू कैटेगराइज देम ऑन दोस बेसिस. ठीक है, उसकी कैटेगरीज पे अगेंस्ट ईच स्टेट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स. सो हर स्टेट के अगेंस्ट जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उनको काउंट करके उनको सम अप करके वी आर गोइंग टू शो देम इन अ सिंपल फॉर्मेट. सो व्हाट वी आर गोइंग फॉर दैट टू बी एबल टू डू दैट वी आर गोइंग टू यूज अ मेथड कॉल्ड ग्रुप बाय. ठीक है, उसमें जिस कॉलम की बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन करनी है वी आर गोइंग टू पास दैट कॉलम नेम, दैट इज गोइंग टू बी स्टेट. ठीक है, और किस चीज़ को हमें सम अप करना है एंड दैट वी आर गोइंग टू यूज इज अ कंप्लेंट आईडी. ठीक है, बिकॉज दैट फॉर ईच कंप्लेन हर कंप्लेन की जो आईडी होगी वो यूनिक होगी. सो वी डोंट वांट टू काउंट द सेम थिंग ट्वाइस. सो कंप्लेंट आईडी इज अ कॉलम जो कि यूनिक होगा थ्रू आउट द एंटायर डाटा सेट. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. And what we're going to do is we're going to count them. Okay, so aggregate जिस तरह करना है we're going to use the count function. And the last thing we're going to do is sort them on ascending order, descending order. ठीक है, so what we did was कि हमने डाटा सेट में जो each स्टेट की जितनी भी कंप्लेंट्स उनको एग्रीगेट किया, सम अप किया, उनको काउंट किया और शो कर दिया बाय हाईएस्ट एट द टॉप. सो हमारे पास जो कैलिफोर्निया का स्टेट है दैट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स. ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग विजुलाइज भी करते हैं. अनदर थिंग वी लर्न इन आवर क्लासेस. विजुलाइज किस तरह किया वही चीज़ हमने ग्रुप बाय किया, काउंट किया. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ. I'm going to save this as complaint counts. I'm going to use that. Okay, what I'm going to do is plot a horizontal bar chart. Okay, and then I'm going to pass colors and a title. Just press enter. Sorry, I have to run this one more time. Okay. Sorry, this went the other way. So we can see okay, the last California and CA is the one that has the highest number of complaints. Okay, so the first insight that we extracted इस डाटा सेट से वो ये थी कि जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है वो कैलिफोर्निया के स्टेट से आती है. ठीक है, so if you were ever building up a story based on this data set, that is how you would go down from. First off, the first thing that you do is कि high level पे आपने एक information बता दी कि सबसे ज़्यादा we have a data set of complaints, so सबसे ज़्यादा complaints आई कहाँ से? कैलिफोर्निया से आई. So now the next step would be कि चलें कैलिफोर्निया की जो complaints है let's dig deeper into that and see कि वो उस स्टेट में किस टाइप की कंप्लेंट्स आई हैं. ठीक है, सही. किसी का कोई सवाल हो एनीथिंग? जी मैं आई विल शेयर द notebook and the data set both so you guys can have a look at it as well. ठीक है, the next thing that we do is we're going to look into कि इस स्टेट के अंदर जो products हैं. Now let's have a look, like let's dig deeper into those complaints के जो complaints आई हैं वो product की basis पे होंगे, फिर सब products क्या थे. So let's have a look at that. So what we're going to do is we're going to use an interesting thing called Boolean mask. So how that works is conditionally if I want to filter the data set कि अगर मुझे data set के अंदर मुझे कोई specific condition को जो rows meet कर रही है सिर्फ उन्हीं का data मुझे चाहिए. So I use something called a Boolean mask. So what I will do is write df state. इस column के basis पे मुझे filter करना है and एक condition मैंने add कर दी कि जहाँ जहाँ state is equals to California.
If I run that, so you will see कि मेरे पास true or false आ जाता है. What I will do is use this condition and pass that to my original data set. What that will do is it will give me all the columns that have California, that belong to the state of California. Now, how do I know for sure कि मेरे पास सिर्फ California की ही rows आई हैं? So let's save this on the side as a temporary variable. ठीक है? What I can do is access the state column and use something called unique method. It will give me all the variables that are all the values that this particular column takes on. So when I press enter, I get only California. How do I know for sure कि सिर्फ इसमें California पहले से नहीं था? So what I'm going to do is going to use the original data set df state और उस पर अगर मैं unique use करूँ, comment this out, and you will see कि मेरे पास सारे states are. However, for them, I only get California because that's how I filtered it out. ठीक है? The next thing that I'm going to do is इसके अंदर California के अंदर जो हमारे पास product है, let's have a look at that. Product की basis पे हम लोग count को produce करते हैं. So we will go with temp, product, and value counts. Initially मैंने एक चीज़ यूज़ की थी group by. Another way of counting multiple products or multiple categories within within a column. ठीक है, एक column के अंदर अगर मुझे categories को count करना हो, there are two ways of doing that. Either we use the group by approach जो कि हमने यहाँ पर use की हुई है at the top, कि हम group by use करें. Another way of doing that is कि हम value counts को use करें. So value counts does the exact same thing. It counts the number of particular categories. It sums it up and groups it and sorts them accordingly. So this is an easier way of doing that. ठीक है. One thing that I always tell my students whenever we are doing this is कि coding का सबसे पहला रूल ये है कि there is no single way of doing the same thing. एक चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं और सब तरीके सही भी होते हैं, सब तरीके गलत नहीं होते. They're usually all right. However, which one of them is right for you in that instance, उस वक्त के लिए कौन सी चीज़ सही है वो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस क्या है. क्या आपको वक्त बचाना है, क्या आपको मेमोरी के लिए मेमोरी ऑप्टिमाइज करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसकी बेसिस पे फिर यू सिलेक्ट इनमें से कौन सा बेहतरीन है एट दैट टाइम. ठीक है. However, there many ways of doing the same thing. ठीक है. Moving on, we see that in the state of California, most of our complaints जो आई हैं वो हैं mortgage से related. ठीक है. We have around 46,000. So let's have a look. Let's sort of visualize that and see how that looks. So what we're going to do is कि हम लोग top 5 complaints को लेंगे, top 5 products को लेंगे. ठीक है, और उनको विजुलाइज करते हैं in a pie chart. ठीक है. So what I'm going to do is I'm going to save this in a separate variable value counts. I'm going to use that here. Head use करने का मतलब I'm just going to use the top 5 rows and I'm going to plot a pie chart accordingly. ठीक है. So we can visualize that. That is very useful whenever you're doing EDA because numbers can sometimes be confusing. But visualizations, a good visualization will always be very easy to understand. As you can see over here, it's very easy to read and very easy to understand. कि mortgage is that product जिसकी highest number of complaints आई. ठीक है. So we're doing these things by side कि हम लोग insights extract करें और insights को present भी करें. ठीक है. Now let's have a look at before we dive deeper into the California thing, let's have a look at the other two questions that we came up with as well and solve those as well. Okay. Let's do some high level analysis over here of which product has the highest number of complaints. What we're going to do is we're going to use the exact same formula. You can copy that easily. Specific, the only thing we need to do is we just need to see which product had the highest number of complaints. So instead of state, we're going to do that on product.
ठीक है. As you can see, mortgage has the highest number of complaints altogether. So we saw that कि California के state में तो already इसमें mortgage was the highest contributor, but overall भी mortgage से related complaints सबसे ज़्यादा मौसूल हुई हैं to the US Consumer Complaint Department. ठीक है. The next thing is which state has the highest timely response. So let's have a look at that. So we're gonna use the exact same thing. सवाल ये पैदा होता है कि which state has gives the highest time response to complaints. ठीक है. So what we are going to do is we're going to group them by state, and जो aggregate जिस चीज़ को हम aggregate करना चाह रहे हैं वो timely response वाला column है. Let me just get the name of the column from here. So what we are going to do here is state के basis पे aggregate करेंगे, and जितने yes होंगे in each state that's going to be counted as a timely response, और जो no होंगे they'll also be counted. So जिसमें भी highest number of yeses होंगे we'll get that list. So इसमें एक और segmentation करें, sorry about that. So we're going to break this problem down into yes and no first. कि timely response है क्या चीज़ equals to yes. So we're going to use that trick that we discussed earlier. इससे पहले जब हमने देखा था कि boolean mask create करेंगे. So what we're going to do is write df dot timely response equals yes. हम देख लेते हैं. एक बार चेक कर लेते हैं टाइम को सही से कि we had the right details. Sorry. हमारे पास सारी yes आ गए. Next thing we're going to do is we're going to do a value count or a group by temp, group by state, timely response, count, sort values, sending. So again, the state of California has the highest number of timely responses. ठीक है. Another way of writing the exact same thing would be to use the value count function. So temp हम कर देंगे because we already have हमारा जो डाटा सेट ऑलरेडी मौजूद है उसमें ऑलरेडी हमने सेगमेंटेशन कर दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें डाटा आ रहा है ऑफ टाइमली रिस्पॉन्सेज एंड दैट इज ऑफ 171 and 121. मतलब California has the highest number of timely responses. ठीक है. इस चीज़ को हम लोग एज अ परसेंटेज भी शो कर सकते हैं which would be very easy. It just requires some simple mathematical manipulation. So इस चीज़ को हम लोग सेव करते हैं. Response counts, divided by response counts sum. So we now have this as a percentage. So 13% of all the timely responses that came for the complaints were from California. Okay. In the same way, you can compute percentages and plot those out. Okay. We have answered all of our questions that we came up with.
Now we'll go back to diving deeper into each of these areas. So हमने देख लिया है कि सबसे ज़्यादा जो complaints आ रही है वो कैलिफोर्निया से आ रही है, सबसे ज़्यादा highest resolution of complaints भी कैलिफोर्निया की है. So let's look deeper into California and see कि इसमें और किस type की exploration हम क्या कर सकते हैं. Because data set बहुत बड़ा है, so bringing all of it together is going to be difficult to manage and it might be hard कि वो CPU की performance पे भी effect करता है. So we're just going to go for California at this point, but you can perform the same analysis. आप same analysis कर सकते हैं for other states as well, just replacing the name of the state. ठीक है. Sure. यहाँ तक हमने कर लिया था. Now that we looked at the complaints, now let's category क्या थी, किस product से related complaints आई थी. Now let's have a look कि उन उस product से related issue क्या आया था. So we have another column in our data set called issue. So we're going to have a look at that. उसके value counts करेंगे and उनके देखते हैं कि issues आए क्या थे. So basically in the state of California, जब मैंने aggregation की on issue और उसके वैल्यू काउंट्स किए तो सबसे ज़्यादा इशू जो आया था रिलेटेड टू mortgages और रिलेटेड इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया was basically loan modification, collection and foreclosure. ठीक है. So लोन की कलेक्शन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इशू फाइल किए गए थे इन दिस स्टेट. ठीक है. So we can plot this out as well using the exact same thing, exact same code, or all you have to do is आपने डाटा को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं. We have the plot the function right over here that's going to plot out our details. ठीक है. So as you can see, सबसे ज़्यादा loan modification थे and सबसे कम attempts to collect debt not owed. सही है. You can do the same, perform the same analysis on other complaints around other issues. I think this is for all of them. इसमें एक और condition अगर आप add कर दें. इसको हम करते हैं इस तरह से. This is a better number. So this correctly represents K state of California. Sorry, this is supposed to be an N. ठीक है. So in the state of California, ठीक है, जो भी products हों related to सारे mortgage related complaints हमारे पास आ गए हैं और उनके issue का हमने analysis किया है. So this and basically helps you chain together multiple conditions. So previously हमने देखा कि हम सिर्फ single condition के basis पे data को किस तरह filter कर सकते हैं. Now what we can do is कि multiple conditions को हमने filter out कर दिया एक साथ. So यहाँ पे हमने जो conditions निकाली हैं वो हैं कि state should be California and product should be mortgage. What you can do is simply replace mortgage with another name of a product and then see कि उससे related सबसे highest number of issues क्या थे. ठीक है. A very easy way of doing this is at the start of your notebook is कि आप variables create कर लें. Complaint product type, age, state, here, and then simply just replace that here. उसमें आसानी होती है कि whenever I change the state over here, मेरे पास जितना भी कोड होगा जहाँ जहाँ मैं ये रिप्लेसमेंट करूँगी वो ऑटोमेटिकली फिर उस स्टेट से रेलिवेंट हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई फॉर अनदर स्टेट. हमारे पास आई थिंक फ्लोरिडा है. FL Florida apparently has the same distribution कि सबसे ज़्यादा जो complaints आई हैं related to mortgage were related to loan modification, collection and foreclosure. ठीक है. Anyone has any questions so far? So please feel free to ask. Link to the dataset, yes, for sure. I will share that after the end of the class. ठीक.
अच्छा, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट हमारे पास मॉर्गेज था, उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स थी. So now let's have a look at the kind of products that we have available. ठीक है. Now you may notice कि जो approach होती है when you're doing EDA is very much not consistent. So basically you come up with a question, you come up with an answer, answer से related एक और question आता है, फिर so on and so forth. So it's like a continuous process that you have to go back and forth on. ठीक है. आपको कंटिन्यूस इटरेशंस करनी पड़ती है, कम अप विद यूजफुल इनसाइट्स. अब मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, उनके बारे में उनका इनसाइट्स निकालते हो, फिर जो यूजफुल चीज़ें होती है दैट यू पुट फॉरवर्ड टू योर हायर अप्स, टू योर सुपरवाइजर. ठीक है. सो इसकी अप्रोच यही होती है. इट समटाइम्स सीम्स वेरी डॉन्टिंग, लोगों को समझ नहीं आता कि डाटा को अप्रोच किस तरह करना है. सो जस्ट स्टार्ट. So my recommendation for that would be कि whenever you have a data set, all you have to do is just start with basic questions like how many, and then come up with a category, say X of this exists. ठीक है. या highest number of something XYZ exists in this data set. ठीक है. So उस तरह से जब आप start करेंगे, when you start, आपको एक starting point मिल जाएगा, तो उसके बाद जो next questions they will just automatically start coming up in your mind कि अच्छा इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं. जब हाईएस्ट, फॉर एग्जांपल इसी डेटा सेट की अगर बात करें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जब आई हैं हमारे पास कैलिफोर्निया से. ठीक है. तो कौन से, फिर उसमें आपने सब प्रोडक्ट्स देखे, फिर उसमें देखा कि आपने जो कंप्लेंट्स आई हैं वो किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा आई थी, जो कंप्लेंट्स आई हैं वो किस नेचर की कंप्लेंट्स थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. सो एक सवाल से फिर मल्टीपल सवाल इसलिए निकल आते हैं. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू ऑब्वियसली इज टू कम अप विद सम क्वेश्चंस, और उनकी भी टेम्पलेट्स मैंने आपको दिखाया कि किस तरह कर सकते हैं. ठीक है. Now let's have a look at some more products. So what we're going to do is just have a look at the products. हमारे पास products कौन कौन से हैं. Account. So among other products that we have apart from mortgage, second highest it's debt collection, and then we have credit reporting, credit card, bank account or service, and so on and so forth. Okay. So what you can do is you can pick up any of these products and then see किस type की complaints आई. ठीक है. So let's also visualize products that we have. Sorry. So what we did here is again इसको हमने convert किया in percentage format और इनको round कर दिया up to 2 decimal place. So we can do that simply using the round function. ठीक है. Again इसको हम plot कर लेते हैं. Let's just copy paste our code here. सही. यहाँ तक किसी का कोई सवाल? Any questions that anyone has? We have done some basic data analysis. The next step that we're going to do from here is we're going to move towards data cleaning, and then we're gonna move towards building our model. ठीक है. So पहला सवाल ये पैदा होता है कि आप मॉडल बिल्डिंग तो कर रहे हो, लेकिन what kind of sorry ठीक है, मॉडल बिल्डिंग तो आप करने जा रहे हैं, लेकिन what kind of model can we create actually? So let's look at our data set one more time. So one of the things that we can think about predicting or using is a classification. ठीक है. बिकॉज हमारे पास जो डाटा सेट है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट ओरिएंटेड है. दैट इज यूजली अ प्रॉब्लम कि टेक्स्ट ओरिएंटेड है तो मॉडल को किस तरह समझाएं कि हमारे टेक्स्ट को किस तरह समझे वो. बिकॉज मॉडल्स जो होते हैं देयर आर मैथमेटिकल इक्वेशंस, उनको तो सिर्फ नंबर समझ आते हैं. सो हाउ डू वी गो फ्रॉम हैविंग टेक्स्ट एंड टेकिंग इट कन्वर्टिंग इनटू नंबर्स दैट आर मैप्ड टू दोज टेक्स्ट वैल्यूज, ताकि मॉडल को समझ आ जाए और फिर वो हमें बता सके इनमें से कौन सी चीज़ मीनिंगफुल है. सो हमारे पास एक मॉडल होता है, इट इज़ कॉल्ड
classification related problems. ठीक है, so इसमें करते ये हैं कि we basically using our data set, and what we're going to do is we're going to classify कि किस type क्लासिफाई कि ये पर्टिकुलर कंप्लेंट किस कैटेगरी में फॉल करती है. ठीक है, so हमारे जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और ऑब्जेक्टिव वुड सिंपली बी कि कोई भी कंप्लेंट आती है, सो उसको हम ऑटोमेटिकली वी विल असाइन इट कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करती है. ठीक है, so in order to do that, what we need to do is we need to look at the values of issues and sub issues and explore them a little bit more. So हम करेंगे ये कि हमारा कोई भी मॉडल होगा वो इनपुट लेगा बेसिकली कंप्लेंट का डाटा, कंप्लेंट आईडी आगे कंप्लेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो कैटेगरी प्रोड्यूस करेगा फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्लेंट. ठीक है, सो in order to do that हम इसमें कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं. One of our options that we have is called logistic regression. Logistic regression is basically a form of regression that we will use. Normally आपने linear regression के बारे में सुना होगा, जिसमें हम लोग continuous variables जो continuous numbers होते हैं उनको उनकी values को predict कर रहे होते हैं, यानी numerical values को predict कर रहे होते हैं. However, logistic is basically classification, तो basically number tags associate कर देगा कि like 0 will represent a certain class, 1 will represent another category, and 2 will represent another category, and so on. So for example, अगर हम product की basis पे classification कर रहे हैं कि कौन सी कंप्लेंट किस कौन सी कंप्लेंट किस इश्यूज के मुतालिक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मॉर्गेज रिलेटेड कंप्लेंट आई है, सो इट इज़ गोइंग टू रीड दैट स्ट्रिंग ऑफ डाटा, यानी जो इशू यूज़र ने प्रोवाइड किया है, एंड उसकी बेसिस पे फिर उसको कैटेगराइज कर देगा कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करती है. नाउ द बिगेस्ट हर्डल ओवर हियर इज कि यहाँ पे जो इशू का डाटा सेट है, अगर आप इसको देखें इशू, those are mostly statements. सही है. One second, let me just have a look at consumer complaint. So यहाँ पर आ रही है if you look at one of the columns, consumer complaint narratives, that is the complaint that the user provided कि अच्छा मैंने इस product में complaint की थी और ये मेरा issue था, लेकिन मेरा जो actual issue है वो obviously हर user अपनी तरह से define करेगा. So for example, there are many mistakes appear in my report without my understanding. I've been a victim of identity theft. So what you can see is कि complaints are there and they are of variable length. ठीक है, there are normal sentences जो कि इंसान को पढ़ के समझ आ जाएगा, लेकिन आप कंप्यूटर को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज इनपुट के तौर पर हम लोग ये फील्ड्स प्रोवाइड करेंगे टू द मॉडल, and what it will do is it will try to pick out the variables or pick out the values and try to associate कि किस issue में इसको relate fall करना चाहिए. So वो auto tagging in a way you can say is what's going to happen here. Items. So it's automatically going to assign कि जो for example identity theft का issue है वो उसकी category क्या होनी चाहिए, उसका issue किस classification में fall करना चाहिए. ठीक है, if you were to give this to a human, so what a human would basically do is कि हर complaint को वो पढ़ेगा, हर narrative को वो पढ़ेगा, फिर वो बोलेगा अच्छा ये category जो है ये complaint की ये issue category है, so I'm going to assign that manually. Now if you look हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1.2 million rows मौजूद हैं अभी at the moment. अगर if you were to give this to a human, it will take forever to do to assign those issues. ठीक है, so what I'm going to do is I'm going to teach you how do you let a computer understand कि उस complaint में से they are able to extract meaningful information or words and then उसको associate कर पाए कि वो किस category में belong करता है. ठीक है, so we're going to do something called term frequency or inverse document frequency. ठीक है, इसमें होता ये है basically in any sentence
जो भी words exist करते हैं, so what we are going to do is हर word की frequency generate करेंगे after doing some pre-processing, ठीक है. So for example यहाँ पे मैं एक add हमारे पास एक sentence है, this is a coding notebook that I am using to type. Okay, this for example, this is a sentence that we have. So what I'm going to do, so in order to make my computer understand कि इस sentence को किस तरह तुम समझो, convert करो to numbers, what I'm going to do is I'm going to remove, पहले तो उसको मैं process करके clean करूँगी. I'm going to remove some stop words. I'm going to remove all the punctuation from it. ठीक है. So अगर for example ये dot अंदर होता तो पहला approach मेरी होती is to remove all the punctuation. ठीक है. पर लिख देते हैं. What we're going to be left with is कि यहाँ पर ये नहीं होगा. I'm going to remove words such as is, and the. Okay. The next thing that is going to happen is I am going to calculate a frequency of how many times each of these words occur. Okay. So calculate frequency. So ultimately हमारे पास आएगा कि there's a word called coding that appears once. There's a word called notebook that appears once. There's a word I that appears once, and so on and so forth. Okay. Once I'm done calculating all of these frequencies for what in a single sentence, what I'm going to do is I'm going to that is going to be called inverse term frequency. कि each word कितनी बार occur करता है in a particular sentence. So term frequency. Next thing that I am going to calculate is going to be an inverse document frequency. ठीक है. So in term frequency का value को इस तरह interpret करते हैं कि अगर higher the value of term frequency for a particular word, that means कि सबसे ज़्यादा occur हुआ है in that particular sentence. And then the second thing is inverse document frequency. इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक कोई भी वर्ड जो एक सेंटेंस में अकर कर रहा है अक्रॉस मल्टीपल सेंटेंसेस वो कितनी बार अकर कर रहा है. सो अगर यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल एक सिंगल सेंटेंस के दिया, अगर मेरे पास मल्टीपल सेंटेंसेस होते हैं, अनदर सेंटेंस के कोडिंग इज माय हॉबी and another sentence that says I love doing coding. So you would notice कि coding जो word है, it is appearing once in each sentence. ठीक है. However, it is occurring in all three of the sentences. So इसकी जो term frequency है वो तो low है, but इसकी जो inverse document frequency निकलेगी, that's going to show you कि वो हर document में exist करता है. So इन दो चीज़ों को combine करके we come up with this value called TF-IDF score. ठीक है. The TF-IDF score basically tells you okay, the TF-IDF score of any particular word is going to tell you how important that word is to a particular document. Okay, and that score is how the computer understands okay, अच्छा जो alphabets है, how do I give meaning to them in a numerical form. Okay, so once a computer is able to understand that, once a computer is able to build that bridge कि ये word कि numerically मैं इसको इस तरह represent कर सकता हूँ और higher values की ये मतलब higher values are important, lesser values are unimportant. So once the computer is able to develop that association, उसके बाद फिर the modeling process becomes easy. ठीक है. And now you might be thinking कि ये तो calculation इतनी like पहले frequency count करना है, and then inverse document frequency and so on and so forth. It seems very complicated. It seems very tedious कि इसको किस तरह किया जाए. But there are libraries that are out there that make this process very easy. इसको इन सब को करना सिर्फ एक single line of code के through आप कर सकते हैं. ठीक है. So what we're going to do, we're going to use this thing called TF-IDF vectorizer जो library में मौजूद होता है NLP की. You can read more about it. NLTK. It's one of the natural language processing related, जिसमें भी text related processing करनी होती है. So this is one of the most used libraries out there. So you can go ahead and use this one. Like explore more about it. So we're going to use a method out of that is TF-IDF vectorizer. ठीक है. And what we're going to do is we're going to tell it कि हमारी language जो है वो English है.
ठीक है, and I want you to go ahead and look at my data. So one second, because अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे सिंपली ये किया बिफोर आई गो अप एंड यूज दिस, एंड दैट इज कि जो हमारे पास डाटा है उसको हम लोग सेगमेंट कर लेंगे. बेसिकली what we're going to do is take a sample out of that. ठीक है, since we can't use all of the data set, again 1.2 million rows है, we can't use all of it, उसमें processing बहुत जाएगी. So I'm just going to use a small subset of it and then perform TDF IDF vectorization on top of that. ठीक है, where are we? Gonna run that. Sorry, I have to run a couple more rows. Let me just do that. Yeah. Sorry. So first off, we're just gonna create some segmentation of the data. So जो हमारे पास काम के variables हैं, we're just gonna set them aside and remove everything else. So what we're doing over here is कि हमने product को ले लिया है और जो consumer complaint narrative था जिसके अंदर explanation दी हुई है वो वाले data set को copy कर लिया. The next thing that we do, इसमें से जो नॉन नल वैल्यूज हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो सारी नल्स थी उनको हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, और कॉलम नेम्स को हमने दोबारा सेट कर दिया. लेट्स हैव अ लुक एट df1.head. हमारे पास बेसिकली डाटा सिर्फ इस तरह सैंपल सा मौजूद है. ठीक है, so we get like around 30% of the original data set. ठीक है, now what we're going to do is we're going to create a sample for this data set. Notice that I'm using a random state का variable यहाँ पर and setting it to 1. So the sampling variable, sampling function, what it does is it randomly selects rows. Now the problem with that is if you're randomly selecting rows and आगे चल के आप उसमें modeling करते हैं, so every time you run this notebook, it's going to produce a different result. ठीक है, so to keep that randomness in control, randomness को sort of fix करने के लिए we use a thing called random state and set it to a number. ठीक है, ताकि हर बार वो same sequence of random numbers, same random selection select करे, ताकि आप जितनी बार भी इस notebook को run करें उसके results हमेशा same आए. Going to run that. Okay, so we have associated categories for all of them. So factorize basically converts the products into categories. Again, वो product जो हमारा predicting variables है, जिस चीज़ को हम predict करना चाह रहे हैं, that's going to, that should be a number. ठीक है, so उसके through हमने associate कर दिया to a number category, और ये values को हम लोग further TF-IDF vectorizer के through हम लोग break down करेंगे. Okay, now coming back to our processing, we already have the samples, we don't need to run this. Once we're done doing that, ठीक है, so each of the complaints, so now what happens is कि हर complaint के इसने 27,000 features create किए. So let's have a look at this features का column. Sorry, ठीक है, so we have 10,000 as a number of rows और number of columns पहले हमारे पास 1 थे. So each of that initially हमारे पास data था. Let's go back and have a look at that one more time. हमने जो input किया है data, that was EF2.head. ठीक है, so जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स का डाटा था जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी ऑफ द कंप्लेंट, व्हाट दिस TF-IDF vectorizer did was it generated these scores for all of the variables and all of the numbers that were, all of the words that were important to that sentence, and उसके TDF-IDF score बनाया. So it was able to generate 27,000 columns or features regards to each complaint. ठीक है,
and it converted that into a matrix. So now let's have a look at that matrix. One sec. It's in the form of a numpy array, so I will have to do let's look at for the first complaint. My project top 10 values are 0, and let's have a look at all of them. Sorry. ठीक है तो अगर हम डाटा फ्रेम सॉरी लिस्ट की फॉर्म में देखेंगे आई थिंक उसके लिए मजा आता है. So you notice कि 27,000 जो values हैं, so most of them are 0, but there are some values in there that क्योंकि मैंने जब sum किया था तो उसकी value आ रही थी 6 point something, so इसका score कहीं ना कहीं exist करता है for the first complaint. And you can check out any number of complaints. उसमें a bunch of these variables will be dummy variables, इसमें zeros और ones आ रहे हैं, ठीक है, या फिर values TDF IDF score की basis पे आ रही है, तो उनका so if you sum them up you will realize hey, they're not actually, all of them are not 0, but there's some value somewhere in those columns. Now all of those columns you wouldn't understand because that is something that the computer understands, so it's somewhere in the middle. So those complaints were converted into a format जो कि computer समझ सके, so it's not really readable for humans. That mapping is something that the scores or the model will understand on its own. ठीक है? So the next thing what we're going to do is we're going to find the number of the number of categories that are most correlated with each of the product categories. ठीक है, सबसे ज़्यादा correlated terms कौन सी थी जो कि हर category के अंदर exist करेंगे. So we'll extract all of those values, and what we'll do is use those values in our model ताकि हमारी क्योंकि obviously जो सबसे ज़्यादा correlated है with the predicting variable, with the predictive variable, मतलब वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को represent कर रही है. So for example, related to the product, what we did here is इनका chi-square basically value हमने निकाली for each of the features, ठीक है, and we printed out those values. So what we are doing is इनको हमने पहले chi-square feature निकाला है for each of those categories जो हमने अभी features create किए, फिर उनका score निकाला है, जिसका सबसे ज़्यादा score है हमने उनको print कर दिया है, and we are looking at the words that are most related. Now you might be wondering what are unigrams and bigrams. ठीक है, unigrams are single words, ठीक है, that are used together, that are used in on its own, and bigrams are two words that occur together very often. For example, यहाँ पे आप देख सकते हैं debit card is a bigram, मतलब जहाँ जहाँ debit लिखा होगा there's a very high probability कि उसके साथ next to it will be card, so debit card will appear together, checking account will appear together. That's a bigram. In NLP we basically use the term called n-grams, n number of terms. So say agar trigram hoga, so it will be 3 words that tend to occur together. Anyway, so coming back to our product, so for bank account and service, the most correlated words or most used words singularly were overdraft, bank, and spot trade in this particular data set. Bigrams में city goal checking, debit card relate, and checking account. So these were the words that are coming up. इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी रिलेटेड टू बैंक अकाउंट और सर्विस, उसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं वो है ओवरड्राफ्ट या बैंक या स्पॉट ट्रेड. ठीक है, सिमिलरली चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स लोगों ने लिखी, जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए उसमें चेकिंग, ब्रांच और ओवरड्राफ्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे. और जो 2 वर्ड्स को अगर आप देखें यानी कि बाईग्राम्स, तो दैट वुड बी 0 bonus, your overdraft fees, your checking account, and so on and so forth. Now, if you are wondering okay, what are the 3 consecutive words that were used most together, so what trigram कहलाएगा, or in order to extract that, all you have to do is in our TDF n-gram range is provide 1 से लेकर 2 की जगह आप 1 से लेकर 3 कर दोगे. ठीक है, so then you will be able to see trigrams as well apart from bigrams, unigrams and bigrams. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो हमने एक्सट्रैक्ट की है इन्फॉर्मेशन, इसकी बेसिस में हमें पता चल गया कि अच्छा हर कंप्लेंट के अंदर ये वर्ड्स कॉमन थे, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई बिलीव वी शुड बी थिंकिंग कि जो कंप्लेंट्स हैं अगर मुझे उनको कंसोलिडेट करनी है, मेरे पास बिलियंस ऑफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनके हर इंसान ने अपनी मर्जी से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसको मुझे कैटेगराइज करना है, तो मैं कुछ कीवर्ड्स की बेसिस पे उनको अगर लाइक इफ आई एज अ ह्यूमन बीइंग वर टू बी डूइंग इट, दैट इज व्हाट आई वुड डू कि कुछ कीवर्ड्स की बेसिस पे मैं उस कंप्लेंट को समझूंगी कि अच्छा इसमें ये
बैंक अकाउंट से रिलेटेड कंप्लेन आई है और वो चेकिंग अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, तो मैं इसको कैटेगराइज कर दूंगी इनटू चेकिंग अकाउंट, ठीक है। सो दैट इज अ प्रोडक्ट दैट बिलोंग्स टू, दैट इज अ प्रोडक्ट इट शुड बी कैटेगराइज्ड इनटू, सही है। So that is how my brain works, and that is exactly how I want the computer to understand कि that is कि जब कोई भी complaints आए तो in most occurring words को तुम देखो, ये सारे words are common across all the complaints that are related to say credit card, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा यूज किए गए वर्ड्स है क्रेडिट फाइल। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ कंप्लेंट और उसके अंदर अगर क्रेडिट फाइल या इक्विफैक्स या क्रेडिट रिपोर्ट जैसे वर्ड्स आ रहे हो बार बार, या फिर रिपोर्ट एक्सपीरियंस या इक्विफैक्स बार बार आ रहे हो, दैट मीन्स दैट यू नीड टू कैटेगराइज दैट एज ए credit card reporting related issue, ठीक है। I hope it's clear so far. If anyone has any questions, please let me know. Yes, that's only for saving time. Ashrad is correct. We don't always have to do that. एक तो ये to save time, and the other thing is कि आपकी computer की capacity होनी चाहिए. I'm using it on my own laptop. It may not be able to process all that data altogether, ठीक है. So that is one of the reasons, ठीक है. Now that we have come up with our scores and everything, we will specify our data sets, split them into X and Y. So the next thing that we're going to do after splitting our data set, once we have acquired our data, our features, so what we are going to do is we are going to split them into test and train data set. So test and train का मतलब कि जो existing data set है उसको हम split करते हैं into a 70-30 ratios normally, or 60-40, or depending upon what your requirement is, what your size of your data is. But ideally कि आप majority of your data पे अपने model को train करते हैं और जो data बच जाता है उसके ऊपर आप test करते हैं. So the idea is कि मेरे you want to give your model some portion of your data to see, to sort of understand कि क्या क्या पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं इन दैट डाटा सेट, एंड देन टेस्ट के ऊपर आप ये चीज़ चेक करते हो कि क्या वो मॉडल उन पैटर्न्स को पिकअप कर पाया था, कि वो पैटर्न्स अगर किसी अनसीन डाटा सेट में एग्जिस्ट करते हैं तो वो उनको पिकअप कर पाता है कि नहीं, ठीक है। सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड स्प्लिटिंग इट इनटू टेस्ट एंड ट्रेन. यहाँ पे हम 25% का रेशियो रख रहे हैं, तो मतलब 75% इज गोइंग टू बी द ट्रेन डाटा सेट जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन करेंगे, एंड 25% is going to be the test data set जिसके ऊपर हम मॉडल टेस्ट करेंगे. I'm going to run that. There are multiple models that we can use. I'll share this notebook with you guys so you can run it on your own. At the moment, I'm only using logistic regression. Sorry. This is finding something called model somewhere. Eleven. Let's see. So what I'm doing here is मैंने एक इंस्टेंशिएट किया, मैंने क्रिएट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल, ठीक है। उसमें अगेन रैंडम स्टेट सेट कर दिया मैंने, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज उसकी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर मैंने क्रिएट किया. Cross validation is basically it's going to segment your data into multiple sections, and it is going to run your model and validate and come up with a validation score basically. So it's going to divide your data set into small chunks. It's going to train and then test and then train and then test and so on and so forth in a consequential basis. ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया अपना the function है हमारे पास cross validation is comes up from a library. What I'm simply doing here is I am using let me just run through this code slowly. I think पहले तो हमारे पास model name आ गया है. ठीक है. सो व्हाट आई एम बेसिकली डूइंग हियर इज क्रिएटिंग क्रॉस वैलिडेशन स्कोर. इसके अंदर मैंने अपना मॉडल का इंस्टेंस पास कर दिया जो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था. इसके अंदर मैंने सारे फीचर्स जो 27,000 कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे यूजिंग द कंप्लेंट्स वो पास किया है. इसके अंदर मैंने पास किया है लेबल्स. लेबल्स आई थिंक मैंने इसको दिखाया है कि व्हाट लेबल्स आर. Okay, so basically इसी columns की category IDs are the labels. It's taking way too much time.
So even though मैंने सिर्फ 10,000 रोज को सिलेक्ट किया था और उसके लेकिन उसने 27,000 फीचर्स क्रिएट किए, उसको मैं जब रन कर रही हूँ तो इट्स स्टिल टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रन. So again, that depends on the computational power of your laptop or your PC that you're using. The best way to use these things is कि आप Google Collaboratory use करें. That is the best way because उसमें computational power का मसला नहीं होता. Another thing that you can use is Kaggle की notebooks आप use कर सकते हैं, Kaggle notebooks, क्योंकि again वो server पे run हो रहा होता है, so आपकी computational power पर इतना मसला होता नहीं है. This could take some time. Sorry, this is not the right one. Actually, it's Google Collaborator. I think मैं ये link share कर देती हूँ आप लोग के साथ. Sorry, no deep learning will be covered in this particular session, but I think in the next series, maybe that's part of that. I'm not sure, but not in this particular one. I am share these links with you guys. How can I do that? Can everyone see my screen or not? Oh, now it's visible. It's still running. I think my laptop is a little slow on that regard. Uh, okay. If anyone has any questions so far, please do let me know. I can move forward, but I think ये run तो होता रहेगा. I'll share this notebook with you guys so you can have a look. किसी के कोई सवालात हैं तो वो जरूर पूछ सकते हैं. Sure. मैंने यहाँ पे 10,000 यूज किया sample or more. 10,000. So I'll explain what comes next once this is done running within our required time. So ठीक है. But the next thing that we do is basically once we get our cross validation के scores, so what we do is उसका हम लोग average of the score, average of the accuracy or standard deviation हम लोग निकालेंगे and we'll produce that and we'll have a look कि on average for each batch that was tested हमारा average mean predicted value and mean accuracy or standard deviation across that accuracy यानी कि कितनी dispersion है across the model. We will be able to see that standard deviation यानी dispersion का मतलब basically ये होता है कि कंसिस्टेंटली आपका मॉडल सही चीज प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं. अगर वो कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा मतलब उसने पैटर्न को रिकग्नाइज नहीं किया. उस पैटर्न को रिकग्नाइज नहीं किया तो उसकी वैल्यूज काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगी. दैट मींस दैट मॉडल इज नॉट एक्यूरेट. उसकी फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई होगी. दैट इज व्हाट यू विल ऑब्जर्व अक्रॉस दैट. ठीक है. Another thing that we normally see when we are done, I think, is it done running? Yeah, I think it is done. Oh, great. So we can run this part. Cool.
So we can see कि हमारी जो mean accuracy है for logistic model is about 0.76, which seems kind of good. But again, that's it's hard to say if it's good or bad because हमने अभी single model को लेके चले हैं, so we can't really be sure. So once we introduce more models into it or we try different other models, ठीक है, so you will be able to see कि you will be able to sort of draw a comparison कि जो model हमने किया है इसमें से बेहतरीन कौन सा है, then you will be able to choose because you will have other options to choose from. Standard deviation is relatively very low. Sure. So we have plotted our mean accuracy over here. Usually it's fine, looks good. The distribution is all right. The next thing that we're gonna do is have a look at. Sorry, that's the wrong thing. Sorry. Acha. यहाँ तक what we have done so far is we have come up with another thing that we can do now is introduce another model and then see कि इसमें फिर क्या difference आ रहे हैं in our mean accuracy or standard deviation. ठीक है? So available models that I have over here are is a random forest classifier, linear scalar vector machine, multinomial, and logistic regression. I'm going to comment that out. It's going to take some time as well. So what this is going to do is it's going to run multiple models, and once this is done running, then you can run this comparison over here, and उसके basis पे फिर you'll be able to see कि कौन से models हैं जिसकी accuracy will basically be able to have a table, and then we'll be seeing कौन सा model है that produced the highest number of accuracy. ठीक है? So just to give you a rundown of the entire approach that we so far followed was a very basic approach. What we did कि हमने एक data set को acquire किया, ठीक है? Okay, so the first thing that we did, I'll just write this down over here. Acquire data set, brainstorm our questions. The second thing we did was brainstorm questions कि what kind of questions हम उस data set को use करते हुए उन सवालात का जवाब दे सकते हैं, किन सवालात का जवाब दे सकते हैं, ठीक है? Third thing we did was EDA यानी exploratory data analysis. Exploratory data analysis में हमने basic questions कुछ पूछने की कोशिश की है, such as questions that were of the nature के how many XYZ category exists in a database, for example. एक sort of template मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह के सवालात आप generally पूछ सकते हैं whenever you have any kind of data set, ठीक है? XYZ category exists, or another question could be something around highest, lowest XYZ categories. ठीक है? Once we were done performing EDA, we did some form of some visualizations of our extracted insights. ठीक है? कर लेते हैं. ठीक है? And then in the fifth part, we decided कि हमने model की prediction करनी है. So we identified कि हमारा x किस चीज़ को predict करने जा रहे थे. We decided to do a classification based on this model because हमारा text rate model था. So the one of the easiest thing that we could have done was automatically categorizing our complaints as they come through the consumer. ठीक है? So classification, we classify where the complaint falls. Classify complaint based on narrative or जो कि consumer ने explain किया. Explanation. ठीक है? And once we were done doing that, once we were done doing that, we built a model and we performed before we built a model classification से पहले we did text processing and feature building. Okay, and the last thing that we did was perform modeling
or build a model and test. Okay. Right. So just to give you a rundown of the entire course that we did today, the entire session that we did today was we followed these steps, and these steps are transferable. मतलब आप यही steps लेकर कोई और data set उठाएं, उसी के ऊपर ये steps apply करें, and you build up a notebook. So that gives you an approach on how to follow that, how to basically explore data. Okay, what does it really mean to be a data analyst? कि डाटा एनालिस्ट बनने का मकसद क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट बनने का मकसद क्या होता है. इट इज बेसिकली हैविंग एन अप्रोच कि डाटा जब आपके पास आए तो उसके साथ करना क्या है, उसके अंदर से इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना किस तरह है, हाउ डू यू डू दैट. ठीक है, एंड ये चीज़ें होती हैं कि यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल डाटा सेट्स ऑन योर ओन. कीप प्रैक्टिसिंग. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल बी sort of become better at understanding कि डाटा पे काम किस तरह करना है. So it doesn't fit at one point once you're very really good. So whatever data is thrown at you, if you have this approach figured out, अगर आपको ये approach आपको रेड गई है इन अ वे, आपको याद हो गई किस तरह अप्रोच को लेके चलना है, तो कोई भी डाटा सेट आपको दिया जाएगा, you'll be able to follow this approach and आप insights को extract कर सकते हैं. ठीक है, so regardless of what organization you work for, you will be able to add value to it. ठीक है, is it done? So I made a small mistake here. यहाँ पे मैंने logistic regression कर दिया था. This was supposed to be model names. I think I can just add models like so. Should do. I think this is once it's done, I'll share the notebook with you guys. I think this All right. is it. That's it. थैंक यू सो मच सारा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. बहुत अच्छी केस स्टडी थी. एंड खुद मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड अगर वो तरीके से इंग्लिश में कंप्लेंट टाइप की जा रही है तो वी कुड एक्चुअली डू क्लासिफिकेशन. पूरी सी टीम Yes. उठा के पहले मैनुअल वो कर ले एनोटेशन, और फिर उसके बाद जो है वो मैनुअल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटेड एमएल बेस्ड हो जाएगी. तो बहुत अच्छी केस स्टडी थी. अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. रमज़ान में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन योर एफर्ट्स फॉर द कम्युनिटी आर वेल अप्रिशिएटेड. Thank you so much. ऑल राइट. मैं यहाँ से जो है वो इससे पहले कि मैं कम्युनिकेशन का इख्तिताम करूँ, आई वुड लाइक टू बिड सारा अ गुड बाय फॉर दिस सेशन. एंड वो लोग जो कि हमारे प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं कुछ वीडियोस चला रहा हूँ, एंड देन वी वुड पुट द सेशन डाउन.